Yes, students, we are live now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Namaste, Sasrikal to all of you. Welcome back again for the social class. As today we're going to start the chapter Indian Foreign Policy. सबसे पहला जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आएगा, इसके अंदर से व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी बोल के आएगा. कीप इन माइंड. पेज नंबर 70, all of you come to the page number 70. First part reader, 70 page number. Page number 70, Indian foreign policy. So the first question in examination is asked, what is foreign policy? So Indian foreign policy बोल के नहीं, खाली what is foreign policy? So the answer is the policy while dealing with other countries is called foreign policy. See, the foreign policy is being prepared with the reason of keeping or maintaining or making relationship with other countries for the purpose of trade. Getting trade के business के लिए ये foreign policy बनाई जाती है, क्योंकि no country in the world is self-sufficient in all the natural resources, as we all know. So each and every country requires some kinds of natural resources which are deficient in that country. माने हर कंट्री को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की जरूरत होती है. कोई कंट्री अल्लाह ताला ऐसी नहीं बनाई इस दुनिया के अंदर जिसमें सब नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं. कुछ ना कुछ कमी रखे अल्लाह ताला ताकि ये कंट्री की वो कंट्री से रिलेशनशिप बनना. There are more than 195 countries around the world and all countries are interconnected to one another due to some different products, due to some different reasons. हर कंट्री वर्ल्ड की एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये अल्लाह की बड़ी कोशिश है जो पूरे कंट्रीज एक दूसरे से मिलकर रहना, इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज डाल दिए. विद दैट द कंट्रीज आर ऑलवेज कनेक्टेड विद वन अनदर फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो हैव अ लुक व्हाट द फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट. वी गोना लर्न द 5 important things in this chapter. Non-alignment moment has been reduced from the chapter, but we'll read it. It's very short one. In short, I'll tell you what it is about. So first we're going to learn about the nature of Indian foreign policy, how the foreign policy of India is and who formed it. Second, Panchsheel agreement which has been signed between India and China, that is Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru as well as Chinese Prime Minister Chou En-lai, that will study 1954 mein. Non-aligned moments, माने after Second World War there was Cold War which started between USA and USSR. रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार हुआ था, that they were telling each other that I am the super powerful country of the world. तो वो दोनों world was divided again in 2 different countries. So India did not join in any of the block. वो दोनों में कोई block में इंडिया नहीं था. Not in group. Non-aligned movement माने not aligned माने joined. So not joined in any group. So that policy was followed by your country because America is helping India for financial purpose, whereas Russia is helping India for domestic purpose, due to which we are not going to have, or we have not joined in any part of the world block. माने कौन से block में हम join नहीं हुए. So next is disarmament. As we all know that all the countries of the world, especially the terrorist countries, or we can call as the countries which are producing more arms and ammunition for the purpose of destructing the world or fighting with other countries, तो वो जो आर्म्स, जो हथियार बना रहे हैं वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज वाले, उसको खत्म करने के लिए, उसकी वजह से जो वर्ल्ड वार्स हो रहे हैं, जो करोड़ों लोग मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग इट, disarmament was the most important weapon that could reduce these all destruction. So disarmament is nothing but elimination and stockpiling of producing as well as stockpiling of weapons. माने हथियारा बनाना और जमा करना, ये दोनों को खत्म कर देना, इसे डिसआर्मामेंट कहेंगे. टोटल डिसआर्मामेंट भी नहीं हो सकता, because we should have some weapons for the purpose of protecting our country when our country is attacked by some other countries. Now last one is anti-apartheid. Apartheid is nothing but a policy of racial discrimination. जो गोरे काले का फर्क होता है, it has been practiced by Americans over the blacks in America, as well as the minority whites over majority blacks in Africa. In America, Abraham Lincoln fought against apartheid, the first person in the world who fought against apartheid. Whereas in Africa, Nelson Mandela, who was inspired by Gandhiji,
He fought against apartheid in Africa and became the first black president of Africa. This is brief information about all those points which we're gonna read today. Have a look. The study of how different countries interact with one another and type of relationship with they strive. Strive means struggle to maintain is needed. See what kind of relationships are being maintained with other countries for the purpose of having some trade business with one another. एक दूसरे से trade business करने के लिए क्यों जरूरी है relationship? तो वो relationship बनाने के लिए foreign policy बोल के आती है. वो policy के बगैर आप कोई country से trade ले सकते ना दे सकते, ना ही उनसे कोई relationship बना सकते. So just like an individual who cannot live in alone, countries also cannot live in isolation, mane separation. So no person is also going to live in isolation any part of the world. ना ही कोई इंसान इस दुनिया में अकेला रह सकता है और ना ही इस दुनिया में कोई कंट्री अकेली रह सकती है without having any relationship with other countries. It's not at all possible. Keep in mind. So hence every country needs to have a foreign policy to regulate, mane to check or to have its interaction with other countries. दूसरे country से relationship अगर होना है, interaction करना है, उनसे बातचीत करना है, उनसे business करना है, we need to have foreign policy. Out of 200 countries in the world, very few countries are strong and most of them are weak. Only few countries of the world are strong, whereas most of the countries of the world are weak because most of the countries of the world have been suffering from the backwardness which they have got from the imperialism and colonialism. जो फॉरेन कंट्रीज जिनके ऊपर भी हुकूमत करे थे, उनकी हुकूमत की वजह से आज भी वो गरीब और परेशान हैं. कुछ जो ज्यादातर वही कंट्रीज हैं गरीब और कमजोर. According to the experts, every sovereign माने independent country has its own foreign policy. Each and every independent country is having its own foreign policy. A sovereign country is that which is not under any country's control, either for external or internal issues. It means that a sovereign country is that country which is not at all been ruling by any particular king in internally or externally by any country. माने ना ही देश के अंदर कोई एक राजा एक किंग जो है देश को चला रहा है और ना ही बाहर कोई कंट्री हमारे देश को बाहर से हमारे ऊपर हुकूमत कर चला रही है. There is nothing like that to a sovereign country, माने independent country. It's an important point to note the India had its own foreign policy before independence and after independence as well. So तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह our country has foreign policy not only after independence but also before independence. India has been considered as one of the major countries of the world with its huge population. As we all know that our country stands on second position as per population, that is after China. Natural resources also we have large quantity that you will study in geography, that there are many natural resources products which are still alhamdulillah in a large quantity in our nation. Military, we are in under top 5. We stand, our country's army stands on 4th number, our country's navy stand on 4th number, our country's air force stands on top 5th number of the world. Intellectual and industrialized country capacities, we have alhamdulillah there are many industries in our country as well for the purpose of its development. India is one the few countries in the world who pursue their own foreign policy. कई कंट्रियों में हमारा देश भी एक है जिसके पास अपनी खुद की foreign policy मौजूद है. A nation should realize that the foreign policy is an art of finding the right policy in spite of many policies. There are many policies in the countries, but this foreign policy is completely different to other foreign policy because this is being started only for the purpose of having relationship with other countries for trade business. It is useful to a country. We can speak of good for international community and international peace also. See, it is not only for the purpose of trade, but also for the purpose of maintaining peace and having relationship, as well as to have communication with international communities. माने world के कई countries से बातचीत करने, मदद मांगने, मदद करने, business के लिए, peace maintain रखने के लिए हम लोगों बीच में. For that purpose, for all this purpose, we need to have a foreign policy. The foreign policy of a government is based on the long-term as well as short-term interest of its own. So whatever the foreign policy today we have, that has short as well as long-term in its own. No government dares to harm to its own interest. No government is going to make it harm or create a kind of harm towards or to our foreign policy. India became republic in 1947 as an independent country. India wants peaceful coexistence with all the countries of the world. So our countries always desire
to have peace around the world with all the countries whoever have relationship with our nation. We always try our level best for the purpose of maintaining peace and security throughout the world. So the major aims of foreign policy, 3 मार्क्स में कंपलसरी आपको क्वेश्चन आता है. एक तो क्वेश्चन नॉर्मल वो हो गया कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी. सो फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू अ पॉलिसी व्हिच इज यूज्ड व्हाइल डीलिंग विद अदर कंट्रीज. समझ में आ रहा है? ये कॉमन फॉरेन पॉलिसी का डेफिनेशन हो गया. दूसरा आपको व्हाट आर द एम्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, 100% आपको एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है. इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम, इवन यू कैन सी द पेपर ऑफ 2019-20, उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिलेगा. ठीक है. सो व्हाट आर द 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सिक्योरिटी, माने द प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन, हमारे देश को बचाना. दूसरा एनरिचिंग नेशनल इकोनॉमी, माने इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ अवर कंट्री इकोनॉमिकली, पैसों के एतबार से हमारी कंट्री को डेवलप करना, इंप्रूव करना. थर्ड, स्प्रेडिंग द कल्चरल रिचनेस ऑफ अवर कंट्री इन अदर कंट्रीज. सो our Indian culture should also be spread in other parts of the world with this policy. See, until and unless you have relationship with others, how can your country's influence be existed there? जब तक आपकी कंट्री की रिलेशनशिप कोई और कंट्री के साथ नहीं रहेंगी, then तो आपके इंडिया का कल्चर वहां पे कैसे आएगा? So for the purpose of keeping your influence in other countries or maintaining it there, you need to have relationship with that country, and for keeping that relationship, you need to even have foreign policy. By increasing the number of friendly countries and check the power of enemy countries. This is also used for the purpose of increasing the friendly countries in with our nation. Apart from that, also checking out the enemy countries who are going to attack us. As there are 2 nations which are bit enemy to our nation, who always try to harm our nation's national integrity. Fifth one, achieving world peace and coexistence. माने एक तो अमन शांति बरकरार रहना पूरी दुनिया में, फिर और पूरी दुनिया के साथ मिलजुल कर रहना. कोएग्जिस्टेंस माने live together peacefully. This is what the foreign policy of our country aims. जो ये सब हमारे फॉरेन पॉलिसी के एम्स हैं. फर्स्ट है देश की हिफाजत, दूसरा है देश की इकोनॉमी को बढ़ाना, तीसरा हमारे कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्रियों में भी फैलना, चौथा जो है और दोस्तों को बढ़ाना और कंट्री से रिलेशनशिप बढ़ाना, और दूसरी कोई कंट्री अगर हमारे पे अटैक करने वाली तो वो चेक करना, एंड फिफ्थ दुनिया भर में अमन शांति क्रिएट करना और दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहना. These are the most important aims of our foreign policy of the nation. The world is cruel. दुनिया बेरहम है. Yeah, that's true. The world is cruel. We wanted to hoist the flag of peace everywhere, but we were cheated. A third, माने sage, in surprise by the Prime Minister Jawaharlal Nehru after the invasion of China into India. See guys, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ये बता रहे हैं that we have always tried our level best for the purpose of creating a kind of peace throughout the world, even though we have been cheated, we have been attacked by different countries due to many reasons. He has given an example of China. See, पहले इंडो पाक वार लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर में, आप याद रखिएगा, ये ईयर्स बहुत ज्यादा अहम है. इंडो पाक वार्स, एक तो 1947 जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तब थोड़ी हमारी उनकी बहस हुई, छोटी मोटी लड़ाई हुई, कंट्रीज डिवाइड हुए. उसके बाद पाकिस्तान के साथ फिर हमारा अटैक हुआ 1965 में, फिर 71 में, ऐसा लिख देता हूँ मैं, 1965, 1971 and 1999 Kargil. These all attacks have been taken place for the purpose of for the purpose of capturing our Kashmir from us. हमारे से कश्मीर को कब्जा करने के लिए कई बार पाकिस्तान ने कोशिश की. और इंडो चाइना वार, that is in 1962. 1962 में चाइना हम पर अटैक करा, और उसकी भी कोई बड़ी वजह नहीं थी. चाइना वाज अबाउट टू कैप्चर तिब्बत. तिब्बत हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, हिमालय का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट 8848 है, इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ तिब्बत एंड नेपाल. तो हमारे को लक्के कंट्री है. सो देयर वाज अ लीडर कॉल्ड दलाई लामा, तिब्बतियन लीडर. ही केम टू इंडिया टू आस्क हेल्प व्हेन चाइना वाज अबाउट टू अटैक ऑन तिब्बत. जब चाइना तिब्बत पे अटैक करने वाला था, तो वहां का दलाई लामा इंडिया को आया, भाई आप जरा समझाओ ना, आपके पड़ोसी को चाइना को हम पे अटैक करते रहते हमारे ऊपर, हमको कब्जा कर लेते हैं, जरा प्लीज यू रिक्वेस्ट देम. तो
चाइना ये बोला कि हाउ डिड यू अलाउ हिम और हाउ डिड यू गिव हिम द शेल्टर टू स्टे इन योर कंट्री whom we are going to attack, तुम कैसा दिए? For that reason it attacked on India in 1962 और दूसरा कोई रीजन नहीं। और 10,000 स्क्वायर फीट हमारा जगह भी उनके अंडर में अभी भी है, and still they are claiming Arunachal Pradesh is theirs only। खैर, so this is what the Jawaharlal Nehru ji said, that our country has been struggling for the purpose of maintaining peace, full relationship with all the countries of the world, but we are always been cheated, मगर हमेशा हमें धोखा मिला है। So in the radio of speech of 7 September 1946, underline कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, कई बार ऑब्जर्वेटिव में क्वेश्चन आया है, when did Nehru ji give a speech on radio, कई बार क्वेश्चन आया है। So it is on 7 September 1946 he gave a speech by outlining or summarizing the foreign policy of the country for the first time to the general public। जनरल पब्लिक को फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होंगी, आगे फॉरेन पॉलिसी से हमारे देश को क्या फायदा होगा, आगे कौन से कंट्री के साथ हमारी रिलेशनशिप रहेंगी, which of those countries which are going to be our friends in future, that has been expressed by Jawaharlal Nehru ji on radio speech of 7 September 1946। The speech gave an indication of the foreign policies, foreign relationships of India is going to foster with countries like America, Russia and China. How our country is going to be very much friendly with these world's most powerful countries in future, that has been explained by the Prime Minister of one nation, that is Jawaharlal Nehru ji। Jawaharlal Nehru ji managed the foreign policy of India as an external affair minister, apart from being the Prime Minister as well। समझ में आ रहा है? क्योंकि our Prime Minister is also the external affair minister of our nation, so he has managed both equally। Hence, many a times the foreign policy of India is also called as foreign policy of Nehru। समझ में आ रहा है? Indian foreign policy belong to Nehru ji। Hence, this policy is also known as Nehru's policy, इसीलिए इसे नेहरू पॉलिसी भी कहा जाता है। Various international and national issues have influenced the foreign policy of Nehru। Various international and national issues have influenced the foreign policy of India। Issues like national interest, geographical interest, political interest, economic interest, military issues, public opinion, international situation, and many other issues have influenced and shaped India's foreign policy। This is what that our foreign policy is working for all these things। Now, basic aspects of India's foreign policy. What are the most important thing in foreign policy of our nation? Why a foreign policy has been formed? So first foremost important thing is Panchsheel। पंचशीला के माने याद रख लो। पंच माने 5, शीला माने प्रिंसिपल। इट इज 5 प्रिंसिपल्स। between India and China। Jawaharlal Nehru Chow and Lai। सर कब साइन हुआ? 1954। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें याद रखना। पहले तो याद रखना ना, व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील? पंचशील refers to the 5 principles। When was this agreement signed? This agreement was signed in the year 1954। Between whom this agreement was signed? Between the Prime Minister Jawaharlal Nehru ji of India and the Prime Minister Chow and Lai of China in 1954 it was signed। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में जो आपको बार-बार आने वाले हर साल। So though countries have their own social, economical, political and cultural systems, they have always struggled to foster means show, express healthy relationships with other countries of the world। So all the countries of the world always try to have a good relationship with all the neighboring countries as our country। Based on the similar lines, in 1954 both India and China accepted Panchsheel principle, that is 5 principles to foster their relationship। That is Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India and Chow and Lai was
द प्रीमियर माने प्राइम मिनिस्टर ओनली ऑफ चाइना या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना भी हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रिंसिपल्स। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। आमतौर पर ज्यादातर हर साल फॉरेन पॉलिसी के बारे में आता है, कभी कभी पंचशीला के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, 2-3 बार पूछा है, इसीलिए ये भी आप याद रखिएगा कि वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। जैसा फॉरेन पॉलिसी के वैसे ही 5 प्रिंसिपल्स पंचशीला के भी हैं। What are those 5 most important Panchashila principles? So first is about respecting each other independence. Sovereignty means independence and regional interest, माने कंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं लेना, तो दोनों को भी बचा के रखना। सेकेंड, नॉन इन्वेजन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना। अब देखिए जब 1954 में, when in 1954 it has been already agreement has been signed already in 1954, then why did China attack on 1962? So it has broken the agreement of peace between India and China. They have broken the agreement and they attacked on our country. We did not repent, we did not take revenge yet. हम फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, उसको वहीं रोक दिया, उस वार को, उससे आगे नहीं बढ़ाए। रिसेंटली फिर चाइना अटैक करने वाला था, somehow India managed to brought peace between us. So it was signed in 1954 with 5 principles that no invasion means no attacks of each other, माने एक दूसरे के कोई अटैक्स नहीं होगा। थर्ड, नॉन इंटरफेरेंस इन द ईच अदर्स इंटरनल इश्यूज, माने कोई भी हमारे कंट्री के स्टेट में कुछ भी अफेयर हो रही है तो चाइना इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू इंटरनल इश्यूज। इट कैन कम इन एक्सटर्नल इश्यूज, माने अगर बाहर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है हमारे कंट्री के साथ, तो देयर चाइना कैन इन्वॉल्व, बट इट कैन नॉट इन्वॉल्व इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अवर नेशन। फोर्थ, म्यूचुअल कोऑपरेशन, माने एक दूसरे के साथ रहना और जुड़े हुए रहना और एक दूसरे की इज्जत करना। We have to respect each other by cooperating to one another. Fifth one, peaceful coexistence. देखो कितनी बड़ी बात है, peaceful को जाने, सुकून से मिलजुल कर रहना। See today most of Indian products are Chinese. अब देखिए ज्यादातर इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स है वो चाइना के ज्यादा प्रोडक्ट्स है। Still we are, even though it has captured our area, we still buy its products, import its products and sell to the Indians, to our countrymen. So these are the basic 5 building blocks of India's foreign policy with the neighbor, that is China. Now second is non-aligned movement. Non-aligned movement आपके रीडर में ये साल माइनस कर दिया गया है, फिर भी शॉर्ट में है। that what I'm telling you, just एक बार सुन लीजिए फिर भी। The world was divided to 2 blocks, that is after the second world war, as I told you, that is Cold War जो हुआ था उसमें दो इसमें डिवाइड हो गया था। that were democratic countries under the hegemony, माने leadership of USA, and communist country under the leadership of Russia, ठीक है। कोल्ड वार समझ में आ रहा है। 2 blocks, block number 1 USA, block number 2 USSR, ठीक है। तो 2 ब्लॉक, वर्ल्ड वाज डिवाइडेड टू 2 डिफरेंट ब्लॉक्स। इसे डेमोक्रेटिक ब्लॉक कहा गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सॉरी कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहा गया, और इसे कम्युनिस्ट। और 2011 की बुक में देखेंगे तो आप रेड ब्लॉक भी कहा गया, कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहा गया। तो जिनसे भी अमेरिका जो भी कंट्रीज को अपने अंडर में एग्रीमेंट कर ले रहा था चाइना के ऊपर अटैक करने के वास्ते, इट हैज साइंड मेनी एग्रीमेंट, सिंटो, नाटो, सिंटो, सीटो, तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट साइन करे। और इन वर्सा पैक्ट बोल के एक एग्रीमेंट आता था, चाइना दूसरों के साथ, सब अपने कंट्री के साथ, कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, वो उन्होंने साइन कर दिया। So India did not join in any, not aligned माने not joined, समझ में आ रहा? Not aligned movement means not joined movement, माने India did not join in any of the blocks because USA always supports India financially, whereas Russia always support us for the purpose of defense. हम आपको डिफेंस के क्या भी आइटम बनाना है। रिसेंटली हम लोग हेरकुलस प्लेन बनाए थे, इससे पहले जब चाइना हम पर अटैक कर रहा था बीच में, तो हम हेरकुलस प्लेन बनाए, दैट वाज सपोर्टेड बाय रशिया। फिर हमारे जो हमारा सैटेलाइट जो गया था इसमें मून के ऊपर,
फर्स्ट सैटेलाइट वो भी हमारे इंडिया का जो है, इट वाज इवन सपोर्टेड बाय यूएसएसआर। हमारा भिलाई और बोखरा 2-3 जगहों पे हमारे पावर प्लांट्स इंडिया में हैं, वो भी सेटल करने के लिए रशिया मदद करा हमें। जब भी हमारे पे हमारी पाकिस्तान की अटैक हुआ, चाइना का अटैक हुआ, रशिया हमको सपोर्ट करा, अमेरिका भी बीच में हमको सपोर्ट करते गया। तो वी कैन नॉट डिनाई बोथ सपोर्ट्स, उन दोनों के सपोर्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा देश दोनों में कोई ब्लॉक में नहीं गया वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर के दौरान। So it was successful in commanding the faith of the both blocks. दोनों का भी भरोसा बरकरार रखी इंडिया। It secured financial assistance from USA, secured military help from USSR. It also dealt every international event independently and welcome or criticize any issue independently. The credit of creating an independent policy of being non-aligned, making it a part of foreign policy, goes to India. After Nehru, the Prime Minister of Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi followed the principle of eye for an eye and in foreign policy. The wars held in 1965-71, ये 1965-71 किसका है? इंडिया पाकिस्तान के जो अटैक हुए थे 1971 में, जो अटैक हुआ, इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ लिबरेटिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश आजादी चाह रहा था पाकिस्तान से, जिसका नाम पहले ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से पहले। तो उस वक्त बांग्लादेश जब आजादी चाह रहा था, इंडिया सपोर्टेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश इन 1971 एंड बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ और बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश पड़ा। तो बांग्लादेश जो आज आजाद है उसे इंडिया की ही देन है, उसकी आजादी। Were guided by the policy. Later, the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee tried to reform our foreign policy and struggled to have good relationship with Pakistan, but it was still crucial. SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. It was founded on 8 December 1985. Underline कर लीजिए आप, मैं क्वेश्चंस 5 पूछूंगा लास्ट में, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। Remember it because this has also been asked many time in examination कि when was SAARC established. ये SAARC के बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो लास्ट चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, देयर यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट SAARC. India, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Afghanistan, these are the 7 countries which are in SAARC. ये भी याद रखना आपको, कौन से कंट्रीज है SAARC में, मालूम रहना आपको। SAARC कॉन्फ्रेंस ऑफ 1986 was held in our state at Bangalore, हमारे स्टेट में बेंगलुरु में हुआ है। और 1986 के और एक इंसिडेंट भी है, डाउरी अमेंडमेंट एक्ट was passed in 1986 only. डाउरी एक्ट 1961 में पास हुआ था, जहेज लेना बोल के, फिर और स्ट्रिक्ट हुआ 1986 में। तो 1986 में बेंगलुरु में जब मीटिंग हुई थी, that was the conducted in Bangalore in the year 1986 only. Okay, now third will go for anti-imperialism. See, anti-imperialism refers to guys, anti माने against, anti means against, imperialism means foreign rule. Guys, imperialism and colonialism refers to the foreign countries rule. So this has been opposed by our nation. India is always against the imperialism because we have faced the ill effects of foreign rule of our nation, that Britishers have lived more than 200 years of our nation and made us backward and poor. हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्री की हुकूमत से देश की हालत क्या होती है। हमारी कंट्री खुद एक मिसाल है जिसके ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत 200 साल से ज्यादा थी, जो पूरे हिंदुस्तान को कंगाल बना दिए, जो ड्रेन थ्योरी कॉन्सेप्ट ना दादा भाई नौरोजी ने दिया है, that how they have looted country, how they have taken all the natural resources from our nation to England, जिससे हमारा देश पूरा गरीब हो गया और आज भी उसकी तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं। Anti-imperialism, against imperialism. The foreign policy of India opposes imperialism. Underline के लीजिए, imperialism के मायने क्या है? What is imperialism? Imperialism is an attempt by a sovereign country to take over the another country with the intention of ruling it for personal gains. माने it is nothing but a kind of rule which is being done by a particular country over a particular country for its personal gain. माने एक कंट्री दूसरे कंट्री की हुकूमत कर रही है अपने फायदे के लिए।
So that is what imperialism. So India always opposes the imperialism, the any foreign countries rule over a particular country for its personal gain. It was natural for India, which gained its independence from an imperial country, to oppose such moves of the other countries. No corner of the world should have imperialism as per the this. Yeah, Chandrayaan-2 बाद में बना, Chandrayaan-1 जो आया था, वेरी गुड जुबैर अहमद, Chandrayaan-1 बोल के जो फर्स्ट बना था, देखिए दैट हैज रीच टू द मून, जो हमारा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जीत थी हमारे देश की, वही चंद्रयान के लिए हमारे को सपोर्ट करा था यूएसएसआर, क्योंकि वर्ल्ड में चीपेस्ट बनाए थे हमारे देश का, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज रीच। हमारे से महंगा बनाया था अमेरिका, मगर उसका फेल हो गया और हमारे देश का जो सैटेलाइट चला गया था। गेटिंग वेरी गुड। Okay, you can write the answer of what is foreign policy on the board. Okay, guys, I'll write. Yes, okay, guys, I'm seeing your comments. Inshallah, I'll go on responding your comments again and again. ठीक है? See, guys, foreign policy का लिख दियो ना, आप यहाँ लिख देता हूँ एक जगह, इधर लिख देता हूँ, दिख रहा ना इधर, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थेरी। एंटी इंपीरियलिज्म को नीचे ले लेता हूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आपको। A policy is used while dealing with other nations. A policy is used while dealing with other nations. आप बोल सकते हैं for trade purpose, for trade, peace, relationship, etc. purposes. ठीक है guys, a policy which is used while dealing with other countries or other nations for trade, peace, relationship purposes. ठीक है, this is what about that. आइए now anti-imperialism. So no corner of the world should have imperialism, declared India in the Conference of Asian in 1949 and 1955 held in New Delhi and Bandung. ये दो जगहों पर जब मीटिंग हुई सार्क की, तब भी इंडिया बोला कि एशियन कंट्रीज की जब मीटिंग हुई थी, so India said, India declared that no country, no corner of the world should have imperialism. माने दुनिया की कोई कॉर्नर में कोई कंट्री पे फॉरेन कंट्री की हुकूमत नहीं रहना, because we have already faced the ill effects of this. इसका हम नुकसान ऑलरेडी देख चुके हैं. Now anti-apartheid, guys, आप लोग लिख लिए होंगे, ऊपर का आंसर मैं दे रहा हूं मैं, ओके? अब आइए anti-apartheid. See guys, apartheid is a policy of racial discrimination which is practiced by whites over blacks in America and Africa. ठीक है गाइस, आप अगर 1 मार्क्स का पूछा आप उतना भी लिख सकते हैं, खाली पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लिखे तो भी चलता, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 1 मार्क्स से ज्यादा अगर आप अच्छा लिखना चाह रही हैं, बड़ा लिखना चाह रही हैं, तो आप इतना लिखे तो अच्छा रहता है, पॉलिसी ऑफ
racial discrimination which is practiced by whites over blacks in America as well as Africa. आप लिखे तो अच्छा रहता है, नहीं लिखे अगर आप याद नहीं रहा तो भी आप इसमें एक लाइन लिखे तो भी इनफ। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माने गोरे काले का फर्क करने की पॉलिसी को हम कहेंगे अपार्थाइड। ओके, ये इसकी तकलीफ गांधी जी को बहुत ज्यादा हुई थी, समझ में आ रहा है? गांधी जी को भी तकलीफ इसकी बहुत ज्यादा हुई थी। इसके बारे में आप आगे वहाँ ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया रोल पढ़ेंगे। तो गांधी जी जब अफ्रीका में, गांधी जी भी अफ्रीका को गए थे, एडन इन अफ्रीका, जहाँ पे गांधी जी 17 साल प्रैक्टिस करे एज ए लॉयर। तो बैरिस्टर थे गांधी जी भी एडवोकेट की डिग्री हासिल करे थे, बैरिस्टर थे इंग्लैंड से। तो गांधी जी 17 साल जब प्रैक्टिस करे अफ्रीका में, तो एक दफा गांधी जी ट्रेन में से सफर कर रहे थे, तो चलती ट्रेन में से गांधी जी को बाहर ढकल दिया गया। तो तब गांधी जी को एहसास हुआ कि दैट व्हाट इज हाउ द रेस इज बीइंग, हाउ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय माइनॉरिटी व्हाइट्स over the majority blacks, and how even they treat with blacks and even with Indians, इंडियन के साथ और ब्लैक के साथ कैसा बर्ताव करते हैं यहाँ पे। तब गांधी जी को मालूम है जब गांधी जी को चलती ट्रेन में से बाहर फेंका गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कूलों में भी the black children were not allowed to get admitted in white school. The black people were not allowed to have food or dinner or lunch or anything in canteen where the whites are staying or whites are having the food. जहाँ गोरे खाना खा रही वहाँ कालों को आना नहीं था, जहाँ गोरे पढ़ रही वहाँ कालों को एडमिशन नहीं था। This was practiced really, I'm telling you, this is really wrong which has been done against the whites. अल्लाह का कलर है। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो सबसे पहले दुनिया में अज़ान दिए वो काले कलर के, सौले कलर के ही थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का कलर है। कभी किसी को हम नहीं बोलना, अगर हम भी कभी किसी को कोई काला क्या भी बोलेंगे तो अल्लाह हमारे भी चेहरे को, हमारे भी जिस्म को बुरा बनाने अल्लाह को टाइम नहीं लगता। कीप इन माइंड, हमारे चेहरे को, हमारे कलर को अल्लाह बिगाड़ सकता है। सो नेवर मेक फन ऑफ एनीबॉडी, किसी का मजाक मत उड़ाइए। उसके दांता बाहर होंगे, उसका चेहरा खराब होगा, या उन्हें काला होगा, पुंसियां होंगे, क्या भी रंधे, नेवर ट्राई टू मेक फन ऑफ एनीबॉडी। समझ में आ रहा है? So apartheid is an attempt by a race of people or a particular skin color to subjugate means suppressed, दबा देना, नीचे कर देना, another race of people of different skin color in the name of supremacy, माने हम अच्छे हैं, हम गोरे हैं तो हम अच्छे हैं, हम पावरफुल हैं। Apartheid is an affront means wrong या cause, समझ में आ रहा है, to human rights and world peace. It's really a wrong thing to the world peace as well as it is also against the human rights. It is nothing but the exploitation of human rights. Human rights को आप exploit कर रहे हैं, violate कर रहे हैं। अगर आप human rights को violate करते हैं, किसी को भी अगर कुछ गलत बोलते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। The foreign policy of India declared that no country of the world should practice this. कोई country world की ये भी practice नहीं करना, खुला बोल दिया हमारा देश। Till recently the majority white people were ruling over majority blacks. Minority white were ruling over majority blacks in South Africa. India declared support to Nelson Mandela and his party African National Congress, who were opposing apartheid in their country. And after fighting and winning, Nelson Mandela became the first black president of Africa. पहले black president अफ्रीका के नेल्सन मंडेला बने। Now disarmament. Guys, disarmament, इसका डेफिनेशन हम कैसा लिखेंगे गाइस? It refers to elimination. It refers to eliminating the production. It refers to the elimination of the production, refers to the eliminating the production and stockpiling of arms and ammunitions. Guys, disarmament किसको बोलेंगे हम? Disarmament refers to the elimination of
eliminating the production and stockpiling of arms and ammunition, माने दुनिया में हथियार बनाना और जमा करना दोनों खत्म कर देना, उसे कहेंगे डिसआर्मामेंट, माने लीविंग विदाउट एनी वेपन्स। अगर दुनिया में हथियार ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, क्या कोई किसी को मारेगा, कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? और दैट खैर टोटल डिसआर्मामेंट नहीं कर सकते हम, मुकम्मल तौर पे पूरा हथियार बनाना बंद कर दे बोले तो कोई भी एक कंट्री का हथियार है तो उन्हें दूसरे कंट्री का अटैक करके उनको मार सकती है। तो डिफेंस पर्पस के लिए थोड़े बहुत रहना, बट ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा उसका स्टॉक बिल्डिंग नहीं होना। दिस इज व्हाट द मेन रीजन ऑफ डिसआर्मामेंट। सो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग, अंडरलाइन कर लीजिए, the process of eliminating of specific arms step by step is called disarmament. There is an increased competition for the production, sale and collection of arms in the world. See, most of the world countries were producing and stockpiling of large weapons, the dangerous weapons which were really harmful for all the countrymen of the world. Many of the countries are worried that this massive, money heavy scale of arms could lead to third world war. इससे third world war हो सकता था, बल्कि बहुत कंट्री वाले डर रहे थे after second world war. Countries with massive arms may attack another country with intentionally or by mistake. कई बार होता है जिनके पास हथियार ज्यादा होते हैं तो या तो हुना को अटैक कर देंगे किसी कंट्री के ऊपर, या तो बाय मिस्टेक कर देते हैं। अब बाय मिस्टेक कैसा होता है सर अटैक? टेक एन एग्जांपल। आपको मालूम होगा रशिया का पहले यूएसएसआर नाम था। यूएसएसआर वाज अर्लियर कॉल्ड एज यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये रशिया जो है इट वाज डिसइंटीग्रेटेड, माने 1989 में क्या हो गया, रशिया के टुकड़े हो गए, 17 टुकड़े हो गए टोटल, जिसमें एक कंट्री का नाम अजरबैजान है, एक कंट्री अरमाकिस्तान है, तुर्किस्तान है, ऐसे बहुत से कंट्रीज में, एक का नाम यूक्रेन भी है। रशिया फिर यूक्रेन, ये नेबरिंग कंट्रीज पर रशिया, पूरे मुस्लिम कंट्रीज है 90% इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसेंटली एक साल की बात है बहुत बात अभी, कि एक मलेशिया का प्लेन जा रहा था यूक्रेन कंट्री के ऊपर से। कहाँ जा रहा था? रशिया को, क्योंकि वो कंट्री रशिया के ऊपर अटैक करना चाह रही थी, तो रशिया के लोगों को मारना चाह रहे थे यूक्रेन वाले। तो यूक्रेन कंट्री क्या करी, यूक्रेन ये कंट्री अटैक करना चाह रही थी रशिया के ऊपर। तो जब प्लेन जा रहा था रशिया के अंदर एक कंट्री के ऊपर से, तो यहां से रॉकेट छोड़ दिए, प्लेन ब्लास्ट हो गया, मैक्सिमम लोग मर गए। जब वो उसके अंदर छानबीन हुई तो उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर फ्रॉम मलेशिया, मलेशिया के लोग थे, रशिया के कुछ थे उसमें। तो जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों को क्यों मारे, व्हाई डिड यू अटैक ओवर द प्लेन, तो उन्होंने बोले नो वी वर टेस्टिंग अवर रॉकेट एंड सडनली दिस प्लेन केम इन फ्रंट ऑफ द रॉकेट, माने हम चेक कर रहे थे, हम टेस्ट कर रहे थे, अचानक प्लेन सामने आ गया। बोलिए, तो दिस कुड बी डन, होना बोल के हो सकता है, या बाय मिस्टेक बाद में रीजन बना सकते हैं उसको ऐसा। तो ये चीज हो सकती है। इसके लिए हथियार अगर बनेंगे नहीं तो कोई अटैक ही नहीं करता। भाई आपके पास बंदूक है में, मिसाल के पकड़ के चलिए एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, यू हैव अ पिस्तौल, ओके, गन, you are keeping it inside, now you are moving, somebody are teasing you, somebody even beating you, लाता मार रहे हैं आपको, गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, ढकल रहे हैं आपको, आप उठ रहे तो बार बार गिरा रहे हैं, क्या करेंगे आप? हथियार नहीं है, क्या बोलते हैं, छोड़ दो भैया, माफ कर दियो, मैं नहीं करता, क्या भी गलती हो गई तो माफ करो। इन दिस वे वी गो ऑन कन्विंसिंग देम टू स्टॉप बीटिंग मी। बट व्हेन यू हैव वेपन, जब हथियार तो क्या करेंगे, छोड़ो बोल रहा हूं मैं, जाने दो बोल रहा हूं मेरे को, मैं छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ मालूम होता, तो क्या करता है, फिर मारने आते हैं, निकाल को डिस्काउंट चारों को उड़ा देते हैं। So when you have weapons, you go on killing the people. For that reason, you have to reduce the production as well as stock building. माने बनाना भी बंद करना है और प्रोड्यूस, उनको जमा करना भी बंद करना है। Have a look. Many of the countries are worried. The presence of nuclear makes the issue more complicated. India is being peace-loving country, advocate for the reduction of arms qualitative as well as quantitative. Since the time of Nehru, India has supported disarmament process, though it is impossible and practical to attain total disarmament, as every country needs arms for its production. An attempt can be made to reduce the arms. माने रोकने की कोशिश कर सकते हैं, मगर हम पूरा खत्म नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मगर पूरा खत्म कर देंगे तो we will not be able to protect our country due to attack by any country. So India is always trying to reduce disarmament, reduce stockpiling and production of weapons through disarmament. Constitution of India's Article 51 advocate for a foreign policy that aims at establishing international peace and cooperation. The disarmament of external affairs of the central government play an important role in formulating foreign policy. So our external affairs and central government has played an important role for the purpose of
foreign policy of India. It always considers our national interest and public opinion. Our government always goes on doing or preparing any kind of law after taking the confirmation through opinions of the people. माने लोगों की opinion confirm करने के बाद ही एक नया law pass होता है. Indian foreign policy aims at strengthening, India strives to have strong foreign policy, foreign relationship with other countries of the world through SAARC, Commonwealth of Nations, as well as moreover, India has been one of the major member of India Commonwealth के जरिए, एशियन के जरिए, SAARC के जरिए, यूएनओ के जरिए वर्ल्ड के कई कंट्री से दोस्ती बनाना चाह रहा है और अच्छे तरह से सुकून से रहना चाह रहा है और सुकून से रहने देना चाह रहा है. बट the neighbors of our country are not at all listening. They just go on attacking our country due to different reasons. Now guys, it's time for moving towards some important questions which can be asked from this particular chapter. Okay. You can put your questions in comment guys. कुछ भी confusion है, कोई word के meaning पूछना है तो आप comment box में डालिए. I will tell you. When did PM Jawaharlal Nehru gave a speech on radio? Second question. When did Nehru ji gave a speech on radio? When was Panchsheel signed? Between whom Panchsheel agreement signed? When was SAARC established? Where was SAARC meeting held in India in 1986? Come on guys, write your answers. I'm checking out in comment box quick and ask the questions also, whatever you want. Okay guys, there are two questions. See, first question is asked by Alfia Nishra. What is imperialism? Imperialism refers to a foreign country rule over a particular country for the purpose of personal benefit. माने एक फॉरेन कंट्री दूसरे कंट्री की हुकूमत करना अपने फायदे के लिए. ठीक है. दूसरा और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्म्स रेस? आर्म्स रेस माने होता है प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, माने हथियारों को बनाना. ठीक है, हथियारों को बोलेंगे आर्म्स. Okay, Zaid Hussaini, September 7, 1946. Very good. Muhammad Afan, your answer is also right. Rabba Mahros, your answer is also right. Shehzaz Khan, your answer is also right. Ariba Mariam, yes, right. Alfia Nishra, right. Salsabil, right. Okay. Rabba Mahros,
1954. Yes, right. Kaif Ali, Kashif Ali, right. Your answer is also Amir Hussaini. Amir Hussaini, yes, right. Shahz Khan, 1954, yes. 1947, Inayat Pasha, very good. Affan, good. Sal Sabil, good. Sayyid Asif. Yeah, okay. Yeah, India and China, good. December 8, 1985, very good. Abdul Quddus, Rabah Mahroz, Rian, Alfia Nishra, okay. Mariam, India and China, good. Jawaharlal Nehru and Chau En-lai. मगर जवाहरलाल नेहरू एंड चौ एन लाई जब आप लिख रही हैं तो दोनों का नाम लिखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सही रहेगा. इट विल बी फाइन इफ यू राइट द नेम ऑफ बोथ द कंट्रीज एज वेल. विद दैट, it was held at state in Bangalore, very good. In our state, Bangalore, very good. Shehzadi Shahz Khan, okay. Bangalore, yes, Bangalore, good, good. Zaid Hussaini, Affan, everybody good, very good. In Bangalore आना देखो जी, at Bangalore नहीं आता देखिए. In Bangalore, keep in mind, okay? Yes, all answers, everybody's answers are correct. I'm very happy to see your answers. Fine. Okay, thank you so much. See guys, first part, second part, social के दोनों के exercise के question answers आपके description box में है. You can download it from there to complete your question answers and revising the answers as well. Question answer याद करने के लिए या लिखने के लिए दोनों पार्ट के दो जो चैप्टर रिड्यूस द ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 10th चैप्टर, वो दोनों रिड्यूस कर दिया हूं मैं. You can download it from there for writing or completing it. Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Bye.